Hi guys, welcome back to another video with Pratham Test Prep. This is your host Sanjeev Bhatia again, and we are back with a new video today. So, what to do for your symbiosis written ability test? There are some tips and some like tricks that you can go ahead and some tips that you can use for your symbiosis. So, these are very important for you to look into, and also I'll be telling you what are the suggested topics that you can find in the paper and what are the techniques that you should use to definitely clear your written ability test. Okay, so if you are new to the channel, please don't forget to hit on the like, share, and subscribe button, and also don't forget to hit on the bell icon for regular updates. Now, if you're not a part of our Telegram channel, do make sure that you subscribe to it. If you're looking for any personalized counseling, you can give us a call on 5 times 9755392. Now, the first thing, what is written ability test? What is going to be asked to you in the written ability test and what you need to keep in mind? So it is writing an essay out of two topics. So there will be two topics that will be provided to you and you have to write two essays on that topic. Next is that the word limit is not given for the written ability test. They straightforwardly say that there is no word limit for the same. And also you can go till 350 to 500 words in the written ability test. So that is basically what written ability test exactly is trying to ask you in the paper. Now the duration that will be given to you, either it's online or offline, it will not be more than 20 to 30 minutes in this case. So that is what written ability test talks about. Now, what is written ability test trying to test out of you, right? What is the aim of the written ability test here? What do they want to see? What kind of things are they expecting from you? So the first thing is that how clearly you understand and address a topic, right? कि आप कितना अच्छे से उस चीज को समझ पाते हो और उसको प्रेजेंट भी कर पाते हो. आपको टॉपिक के बारे में कितनी क्लैरिटी मिली या आप कितने क्लियर हो उस टॉपिक के ऊपर. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट दे आर ट्राइंग टू टेस्ट यू ऑन. नेक्स्ट इज योर लैंग्वेज एबिलिटीज. क्या आपको सही से लिखना आता भी है कि नहीं? हाउ इज योर ग्रामर? व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस कैन यू फॉर्म while you are writing those written ability test passages? Now the next thing is that your knowledge and content, obviously because these are the things that are related to knowledge, they will be testing you on knowledge. So you need to have knowledge and there has to be relevant content. यहाँ पे आप अगर आपको नहीं आता और जबरदस्ती की आप चीजें लिख के आएंगे तो शायद आप किसी प्रॉब्लम में लैंड अप हो जाए that your paper might not be selected. So your content should be absolutely clear and it should be correct and there should be no like running around the bush and not talking about the issue. You have to be very specific with your content and knowledge. Next is your way of expression of the ideas and also the organization of ideas. Okay, the way you are expressing yourself and also how have you organized your ideas for the written ability test. तो इस बात का भी आपको जरूर से ध्यान रखना है कि आप एक प्लान बना के अपना रिटन एबिलिटी का पैसेज लिखना स्टार्ट करें और आप ढंग से एक्सप्रेस करें और ऑर्गेनाइज करें अपने आइडियाज को प्रॉपरली so that you are able to write it perfectly. Now coming to the next part is that what can be done for written ability test. What do you need to do? First is read the topics around that are going on. I will talk about the topics towards the end of this session, that what are the topics that you can focus on for a written ability test. So do stay connected for that. But first we are talking that what can be done, right? What can you do to prepare yourself for this written ability? First is that you need to read about the topics that are going around you at this moment. Okay, जो आपके आसपास चल रहा है this moment पे न्यूज़पेपर पढ़े, जीके न्यूज़ पढ़े, आप लीगल के कोई वेबसाइट्स लाइक लाइव लॉ एंड ये सब सारी चीजें को आप पढ़ते रहें. नेक्स्ट इज दैट यू गो फॉर प्रैक्टिस राइटिंग द पैसेजेस. You start practicing it right now. That is going to help you a lot because सीधा लिखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो एक बार ट्राई तो करिए कि आप कैसा लिख रहे हैं. Try that also. Next is current affairs are definitely important. So if you were preparing for CLAT and AILET, you might have read a lot of current affairs. So these current affairs are pretty important for your written ability test. Next is provide instances and examples in the passage. ठीक है,
आप एक कोई सिनेरियो बताए, रीसेंट केस बताए, एग्जाम्पल्स दे पैसेजेस के अंदर. दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर. नेक्स्ट इज that provide factual and statistical figures if you have the information on it. ठीक है, अगर आपको पता है, कोई आपने stats पढ़ा और it is correct, then you can definitely mention it in your passage also. That gives a demonstration of the kind of knowledge you are having at that moment when you are writing that written ability test also. ठीक है, so ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. नेक्स्ट आता है कि क्या क्या हो सकते हैं टॉपिक, कौन कौन से तरीके के हो सकते हैं. पहला तो हो सकता है आपसे सोल्यूशन मांगा जाए, ठीक है, या सजेशन मांगा जाए. तो सोल्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम, सजेशन बेस्ड प्रॉब्लम, अग्री और डिसअग्री विद द स्टेटमेंट काइंड ऑफ topics can be asked to you. Next is discussion of any topic. They can tell you to discuss on an issue, right? That's it. So these are basically 3 to 4 types of topics that you basically see in these written ability tests. Now, what is the next thing that you need to take care of? How can you write this, right? Writing a written ability is like, yeah, sir, batao ki introduction kaise likhna hai, kya likhna hai. We will talk about the methods that you can pick up while writing for these answers. So the first is that you can use the IBC method, that is the introduction, body and conclusion. That is the straightforward जो आप स्कूल से यूज करते हुए आ रहे हो, वही मेथड यहाँ पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज करें. इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, इसका स्ट्रेट मेथड होना चाहिए 131. तो आप 131 रूल लिखे, मतलब एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का, 3 बॉडी के, एंड अगेन 1 ऑफ द कंक्लूजन. सो इट्स वेरी सिंपल. यू फॉलो द 131, यू राइट इट एंड यू विल बी एबल टू गेट थ्रू. नाउ अगर आपको कोई सोशल पॉलिटिकल इशू दे दिया जाता है, तो आप बॉडी के अंदर क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, ठीक है. सो यू कैन टच डिफरेंट एरियाज दैट आर देयर. ओके, यू कैन गो फॉर इकोनॉमिक, यू कैन टच द इकोनॉमिक फ्रंट ऑफ दैट प्रॉब्लम, यू कैन चेक द सोशल फ्रंट, यू कैन चेक द पॉलिटिकल फ्रंट, लीगल फ्रंट, एनवायरमेंटल फ्रंट, टेक्नोलॉजिकल फ्रंट. सारे फ्रंट्स को आप चेक करें और लिखे उसके बारे में. तो कोई भी सोशल पॉलिटिकल इशू आता है, so you can always write about all of these fronts also that are there, and that is something which is really really important. Now next is, when there is a historical aspect, you need to look on that aspect. There can be questions like कि भाई आपने पहले ऐसा होता था और अभी क्या हो रहा है. That is what they are asking you. They are making you compare the previous circumstances with the current scenario. Okay, so that's what they can test you on. And also when they are asking you to write on something really specific, then you also need to look at the bigger picture. आप देखें कि अगर आपको एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में पूछ रहे, तो सिर्फ ये मत बताओ कि क्या क्या फायदे हैं, नुकसान है. उसका बिगर पिक्चर भी देखो कि लॉन्ग टर्म में उसका क्या इफेक्ट होगा, कंट्री के कैसे लोगों का माइंड चेंज हो रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट, psychological effects, health issues. Talk about all those things. So you always need to look at the bigger picture in this case. आप छोटे से उस टॉपिक पे फोकस होकर ना रहे, बिगर पिक्चर भी देखें और उसके बारे में भी जरूर से बात करें. Now, how to write the WAT essay, कि कैसे लिखा जाए, मैं आपको ये बताऊंगा. इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, या आपको अपनी बॉडी के अंदर या कंक्लूजन के अंदर क्या लिखना है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे सकता हूँ. Now first is, you always need to write 3 to 5 sentences in your introduction, and introduction is the introductory line of your passages. So you are introducing the person, that what are you going to write about. So do make sure that before you are writing the introduction, you are clear and you have organized the idea कि आप पैसेज में किस बारे में बात करने वाले हो. तो दूसरी चीज आती है, just introduce in the introduction without mentioning any main points. तो आपका कोई भी मेन पॉइंट आपने सोचा है, उसको आप अपनी बॉडी के लिए बचा के रखें, पर इंट्रोडक्शन में सिर्फ इंट्रोड्यूस भी करना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है. You don't have to mention any of the main points. Now next is that provide some basic information about the topic also. ठीक है, अगर वो टॉपिक ना लिखा हुआ भी है, ठीक है, they are talking about marital rape. So explain what is marital rape. You can put some definitions out there. You can quote any law there, right? Whatever you know about it. So provide some basic information about the topic also. Now the next thing is also explain what is the relevance of the topic in the real life or in the current scenario.
So talk about the relevance also. So that is your introduction basically. Now coming to the body, what should happen in the body? Now the first is try providing personal opinion. Okay, अपनी पर्सनल ओपिनियन भी बॉडी के अंदर दे, सजेशन नहीं ओपिनियन मांगी है तो सजेशन नहीं ओपिनियन देनी है. इफ यू आर वेल अवेयर अबाउट द टॉपिक, एनी एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन द टॉपिक ऑल्सो एक्सप्रेस दैट. अगर आपको किसी एक्सपर्ट की कोई ओपिनियन पता है, यार आपको या ज्यादा पता है या आपने ज्यादा एनालिसिस कर लिया है उस टॉपिक का, so express your opinion on that also. Now the next thing that comes up is that you should quote examples, you should quote facts and statistics, you should quote reasonings that आप ऐसा क्यों कर रहे हो. तो बॉडी के अंदर ये सब आपको बताना पड़ेगा. तो ये सारे लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज जो है, ये सारे आप अपनी बॉडी के अंदर यहाँ पे टच कर सकते हो और उनके ऊपर लिख सकते हो, so that there is an entire passage which covers every aspect of that problem also, right? It is a smart way of writing your written ability test. Next is that how to write your conclusion. अब conclusion में क्या लिखा जाए? Conclusion भी एक बड़ा specific सी चीज होती है और आपको अपना end करना है, so that is where you are ending on the note for that person who's checking it. तो पहली बात, आपको अपना न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रखना चाहिए. ऐसी चीज जब भी आप लिख रहे हो जहां पे कोई आपका काम पढ़ने वाला हो, तो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से लिखा जाना चाहिए. सो प्लीज कीप अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव while you're writing those passages. Don't go a lot in against, right? If you're talking about Russia Ukraine war, तो आप पूरा रशिया पे ना चले जाए, ठीक है? आप थोड़ा न्यूट्रलिस्टिक व्यू रखें अगर आपको लिखना है. So please make sure that you are writing it in a neutral manner only. Now conclusion. So what do you need to write in the some conclusion? So first is the summary of the passage you have written about. अब पहले अब आप अपना ऊपर जो आपने बॉडी एक्सप्लेन करी है उसके बारे में बात करें कि what is the summary of the passage that you have written about. Second is you should not write more than 3 to 4 sentences, और इसमें आप अपने फाइनल कंक्लूडिंग सजेशन भी दे सकते हैं. इसमें आप एडअप कर सकते हैं अपने सोल्यूशन, सजेशंस, एक्सप्लेनेशन, योर थिंकिंग, स्टेट ऑफ माइंड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट इन दिस करंट मोमेंट. आप सब कुछ वो 3 to 4 सेंटेंसेस में लिख के जरूर से खत्म कर सकते हैं. नेक्स्ट इज दैट यू कैन ऑलवेज एंड योर पैसेज बाय गिविंग सम सजेशंस, प्रिडिक्शंस, or a one-liner ending statement that you want to write about. So either or, it is your complete choice what you want to pick up, and it also depends on the kind of like passage you get in your exam. Next is what are the suggested topics. क्या क्या आ सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है और आपको क्या क्या रिविजन करना चाहिए. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आप सबके लिए, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा और ये मिस मत करिएगा. So the first topic is COVID-19 and vaccines, right? Because you are a 2022 batch, आप लोगों ने 2021 की मिजरी देखी है. So you guys are there regarding COVID-19 and the vaccination. Entire journey is taken by you. So you are an essential part of it. So they can ask you about that. Tourism or also related industries to COVID-19 that were affected a lot will be asked to you or may be asked to you. Next is data and privacy. As we know that the most expensive commodity that is going to be in the future is data, right? And privacy is a very important factor of our life, and it is also a constitutional and a legal right. So privacy and data can be something that they can ask you questions or they can make you write your written ability test on. Next is cryptocurrency. As we know, crypto has increased a lot. There are legalization problems, like acceptance problems, and also a lot of problems regarding it being untraceable and things of that sort. So there can be a lot of topics that can come out of cryptocurrency also. So please get a basic idea about it too. Now coming to sanctions, as we have seen right now, there are different sanctions that US has put on different countries like China, Russia, and other countries like Israel, Iran. There are some few sanctions that all the countries have from the US sometimes. So there can be something related to sanctions also. So please understand the factor of sanctions also. How do they work? What exactly sanctions means? उनका मतलब क्या होता है, कैसे लगते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, कैसे उससे क्या resolution देने की कोशिश की जा रही है. Please know a little bit about sanctions also. Next is climate change. Okay, climate change एक बहुत important topic है जिसपे आपसे कुछ पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर.
So do make sure that you are reading on climate change and also the technologies that are relating to climate change, like electric vehicles, okay, nuclear power plants, there are hydropower projects, so there are glacier melt, ये सब आप जो भी हो रहा है थोड़ा क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, आपको लिखने के लिए दिया जा सकता है. नेक्स्ट इज वॉर्स एंड अदर इश्यूज एंड लाइक वॉर तो चल ही रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर, other wars that are there, Afghanistan, Syria, Libya, African wars that are going where there are civil tensions going on. तो थोड़ा सा आइडिया अगर आपको होगा, Israel Palestinian issue, Afghanistan war, what is going on between Russia and Ukraine, what was the exact issue, ये सारी चीजें आपसे थोड़ी पूछी जा सकती है. तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आप आइडिया या बेसिक नॉलेज एक्वायर करें. और क्या पूछा जा सकता है? फार्म लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी हैव सीन एन एंटायर ईयर और द लॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट एनीवेयर वुड एनी कंट्री वुड हैव सीन, राइट? सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, राइट? विमेन एम्पावरमेंट, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. और अबॉर्शन लॉज, एज यू सॉ टेक्सास एंड अदर कंट्री इन अमेरिका ऑल्सो एंड अदर कंट्रीज इन यूरोप ऑल्सो going on a lot of abortion laws. So that is something that is also related to like your knowledge on laws also. Live-in relationship पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या लिखने को दिया जा सकता है. जुडिशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री, राइट? हमारे जुडिशियल सिस्टम के ऊपर कोई आपसे कमेंट करने को भी बोला जा सकता है. अब बोला जा सकता है अफ्स्पा के बारे में बताएं, राइट? आर्म्ड फोर्सेज एक्ट जो है उसके बारे में भी आपसे कोई ना कोई लिखने के लिए सजेशन टॉपिक्स में आ सकता है. सो डू मेक श्योर दैट यू आर अवेयर अबाउट दीज इश्यूज. सो ये सब मैंने आपके लिए लिस्ट बना रखे ताकि आप भी इसके ऊपर थोड़ी सी तैयारी करके जाए. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. यू सीन टेक्नोलॉजी, न्यू ड्राइविंग टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन, सुपर कंप्यूटर्स, everything. This is something that they can make you write on also. Online technology, they can go for OTT platforms, Netflix, YouTube, Amazon Prime. They can go for any other channels or any other apps that you use. So OTT platforms are huge nowadays. So there can be something that can be made to write on that also. So do make sure that you have an idea about OTT platforms also. Now, next is artificial intelligence. As you know that the world is going towards autonomous driving, autonomous flying, and all those things. So artificial intelligence also play a very, very minute role in our real life right now, because what we see is artificial intelligence and machine learning up to a very next level. So that's what is very important for you to know, that artificial intelligence is one place that they can ask you questions from too. Now, next is politics and culture. थोड़ा सा politics and culture भी important होती है, because उससे भी आपसे question पूछा जा सकता है. सोशो पॉलिटिकल हमेशा टॉपिक्स बड़े हॉट होते हैं. सो कल्चर और पॉलिटिक्स के ऊपर काफी बार रिटनबिलिटी टेस्ट में लिखा जाने को दिया गया है. सो डू मेक श्योर दैट यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट दोस टॉपिक्स ऑल्सो. सो दिस इज माई like giving to you for the written ability test. I hope you got some idea that what you need to do in this test, and I don't want to waste a lot of time of you guys, so that you can prepare for this, and you should start writing few passages for your own self so that you are able to practice. I hope I was able to give you some knowledge about the written ability test, and you can prepare on these lines and write your answer in the paper on these lines and help you out to crack the written ability test. So thanks for joining this live session. Hope you all had some fun today to learn this session for tips and tricks for your written ability test. So take care of yourself and have a nice day, and hope to see you all again very soon on the same place and same time. So do make sure that you hit on the like, share, and subscribe button, and also don't forget to hit on the bell icon. Thank you guys. Have a nice day.